Hello everyone, I welcome you all to our United classes. So this is our first lesson, and in this lesson we are going to study about class 12 b.st NCERT's chapter number 1, which is nature of management. तो इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. So if you will like our video, please don't forget to like, share and subscribe our channel. So without me wasting much time, let's start our lesson. So what is management? So here is a definition given by Robert L. Triveli and M. Jean Newport. So this definition is: management is defined as a process of planning, organizing, actuating, and controlling an organization's operation in order to achieve coordination of human and material resources, essential in the effective and efficient attainment of the objectives. तो बेसिकली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. तो उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, उन्हें अचीव करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज, इन सब चीज़ों का यूज़ होता है. एंड इन सब चीज़ों का यूज़ करने के लिए हम पीपल्स हायर करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज. देन वो ह्यूमन रिसोर्सेज जो हम हायर करते हैं, जो पीपल हायर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो फिर हमारा जो आगे का वर्क है वो परफॉर्म करते हैं. उन जो रिसोर्सेज है, मटेरियल रिसोर्सेज, उन्हें यूज़ करके जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उसे फुलफिल करते हैं. एंड ये सारा चीज़ को मैनेज करता है एक मैनेजर, जो कि इन प्रोसेस का यूज़ करता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग. सो ये सारे स्टेप्स, ये फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में डिटेल में. So basically, management is an art of doing things with the aim of achieving the objective of the organization effectively and efficiently. So this is the basic, this is the, the sorted definition which I have written here. And basically, effectively and efficiently का मतलब क्या है? Effectively is completing the work given to the employees in the given duration of time. मतलब जो टाइम एम्प्लॉय को मिला है, उस टाइम ड्यूरेशन में उस काम को कंप्लीट करना ही उस एम्प्लॉय का इफेक्टिवनेस शो करता है. लाइक हाउ अ पर्सन इज इफेक्टिव, it is shown by if that person is completing his tasks on time. And what is efficiently? Efficiently is performing and functioning in the best possible manner and with the best usage of time and with the least waste of time. बिना टाइम वेस्ट किए सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करके एक क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, क्वालिटी सर्विसेज प्रोड्यूस करना ही एफिशिएंट वर्कर का साइन है. एक वर्कर किस तरीके से एफिशिएंट है, इफ दैट वर्कर इज प्रोडक्टिव. बेसिकली एफिशिएंसी एक एम्प्लॉय का यही चीज शो करता है कि वो एम्प्लॉय कितना प्रोडक्टिव है, वो रिसोर्सेज का कितना यूज कर रहा है एंड किस लेवल तक यूज कर रहा है, लीस्ट रिसोर्सेज यूज करके ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है. सो एफिशिएंटली शोज द प्रोडक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉय. सो नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. एन ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट ऑफ बेसिक गोल्स व्हिच द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू अचीव. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल्स. तो एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी एक ऑब्जेक्टिव होती है. जैसे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी अगर ऑब्जेक्टिव है अर्निंग प्रॉफिट या मैक्सिमाइजिंग सेल, तो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, वो ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है. कुछ ना कुछ उसकी एम या गोल है. तो मैनेजमेंट उस गोल को उसको अचीव करने में हेल्प करता है. एक मैनेजर का काम होता है उस गोल, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना. सो मैनेजमेंट इज अन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. सेकेंड, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव इज अबाउट कि मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट है.
मैनेजमेंट सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वो किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, वो हर ऑर्गेनाइजेशन में है. इवन इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज पेट्रोल पंप और अ स्कूल और अ हॉस्पिटल, इन सबको मैनेज करना ही पड़ता है. ये सारे स्कूल, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप्स या कोई कंपनी, इन सब को मैनेज करना, इन सब के लिए मैनेजमेंट ज़रूरी है. जो भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी स्कूल, हॉस्पिटल या कोई भी कंपनी में जो भी फंक्शंस होते हैं, उन सब फंक्शंस को परफॉर्म करना, वर्क, इन सब चीज़ में मैनेजमेंट चाहिए. अगर मैनेजमेंट नहीं होगी तो केओस हो जाएगा. जैसे अगर स्कूल में अगर प्रिंसिपल नहीं होंगे, टीचर्स नहीं होंगे, तो हाउ विल अ स्कूल वर्क? So management is present at every organization, whether it's a petrol pump or a hospital or a school. And even a manager who is in India or Japan or Germany, they will do the same work. हर मैनेजर का काम एक है, बस उनके काम करने का तरीका अलग हो सकता है ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर कल्चर. So management is present at every organization, whether it's economic or social or political. Third is management is multi-dimensional. Management मल्टी डायमेंशनल है. वो सिर्फ एक फील्ड में काम नहीं करता, वो 3 डायमेंशंस में काम करता है. दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है. देन मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जो ऑर्गेनाइजेशन में पीपल है उन सबको मैनेज करना. देन लास्ट मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. लाइक मैनेजमेंट ऑफ वर्क इज अबाउट कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, तो वो जरूर किसी ना किसी चीज के लिए है, किसी काम को करने के लिए. अगर एक मैन्युफैक्चर फैक्ट्री है, अगर एक फैक्ट्री है जिसमें किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा, तो वो उस फैक्ट्री का काम है, वो उस काम फैक्ट्री का वर्क है. देन उस वर्क को करने के लिए जो पीपल हायर किए जाते हैं, जो स्टाफ, जो मैनेजर, जो लेबर्स, एम्प्लॉयज हायर किए जाते हैं, देन उनको भी मैनेज करना पड़ता है. दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल. एंड लास्ट मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इज अबाउट दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर मैनेजमेंट एंड वर्क, इन दोनों को मिलाकर जो काम परफॉर्म होता है, लाइक जो वर्क जो पीपल परफॉर्म करते हैं, वो जो प्रोसेस होता है, उन्हें ऑपरेशंस बोलते हैं. लाइक पर्सन हु इज बाइंग द रॉ मटेरियल, अ पर्सन हु इज प्रोड्यूसिंग द गुड्स, और समवन इज पैकेजिंग, और समवन इज असेंबलिंग द प्रोडक्ट्स. तो ये सारे जो ऑपरेशंस है छोटे छोटे, इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, वो सारे ऑपरेशंस ही होते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क. उन सारे ऑपरेशंस को भी मैनेज करना पड़ता है. तो इन तीनों डायरेक्शंस में मैनेजमेंट वर्क करता है. दैट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. सो नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. जो मैनेजमेंट है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. लाइक प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन डायरेक्टिंग, देन स्टाफिंग, देन कंट्रोलिंग. So these steps are performed continuously. Like अगर एक organization है, उनमें like you started planning to open an organization to produce goods, whatever the goods related to. प्लानिंग के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ हम ऑर्गेनाइज कर लिए. दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. सारे पोस्ट, सारे प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल्स कहाँ से आएंगे, पोस्ट पीपल्स कहाँ से आएंगे, वो सारी चीज़ ऑर्गेनाइज हो गया. देन आफ्टर दैट डायरेक्टिंग, कैसे होगा सारा चीज़ें, लाइक ये हमने डायरेक्ट कर दिया, ये चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट होंगी. देन उसके बाद स्टाफिंग, जो हमारा पीपल का रिक्वायरमेंट है, मैन पावर का रिक्वायरमेंट है, दैट इज स्टाफिंग. तो हमने मैन पावर भी हायर कर लिया. देन आफ्टर दैट कंट्रोलिंग. सब चीज़ स्टार्ट हो जाने के बाद जो एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन सारे एक्शंस को कंट्रोल करना, उन मॉनिटर करना बेसिकली कि वर्क अच्छे से हो रहा है या नहीं. एंड आफ्टर दैट अगेन दैट साइकिल गोज ऑन टू प्लानिंग. इफ अगर आप कंट्रोल कर रहे हो सारी चीजें एंड उसमें आपको कोई डिफेक्ट मिला, एंड और इफ you want to start a new line of segment or new product, then again you will start from planning, organizing, directing, staffing, controlling. So this is a continuous process which goes on. Then we have management. It is a group activity. Management is a group activity because in an organization there is lots of people, not only manager, there are lots of individuals who are from different sectors, different diversity. They have different goals and different wants. So
हर इंडिविजुअल एक डिफरेंट जगह से आया है, कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल, एंड हर इंडिविजुअल की एक अलग नीड है, दे हैव देयर ओन नीड्स, देयर ओन गोल्स, एंड दे हैव जॉइंड द ऑर्गेनाइजेशन विद डिफरेंट पर्पसेस। देन वो सारे लोग मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए उन इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, उन इंडिविजुअल का कोऑर्डिनेशन वर्क में होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई अ मैनेजर क्रिएट्स an environment in which the individual works towards the achievement of the goals of the organization. That's called the teamwork, and they work in the common direction. So management is a group activity. Every people of the organization is involved in the achievement of their organizational goal. Then fifth is management is a dynamic function. Basically, management is a dynamic function is about the environment, outside environment of the organization is dynamic. हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी चल रहा है, द रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, वट एवर द वर्किंग कंडीशन विच इज फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन, अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा आउटसाइड एनवायरमेंट है, दैट इज चेंजिंग कंटिन्यूसली। तो डायनेमिक इज ऑल अबाउट कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन इस बाहर के चेंजेस के साथ कोप कर सकता है। द मैनेजमेंट हैव टू बी डायनेमिक सो दैट कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बाहर के चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ कोप कर सके। अगर कोई पॉलिटिकल चेंज होता है, कोई इकोनॉमिकल चेंज होता है हमारे एनवायरनमेंट में, या किसी तरीके का सोशल चेंज, तो उन सब चीज़ों को भी उन सब चीज़ों से भी हमारे मैनेजमेंट, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे फर्क पड़ता है। सो दैट्स व्हाई द मैनेजमेंट हैव टू बी डायनेमिक टू कोप विद द आउटसाइड एनवायरनमेंट। Organization interacts with the external environment. The organization interacts with the external environment, which consists of social, economic, and political factors, changes. Technology is changing day by day. So these are the changes which the organization has to face. So that's why the management have to be dynamic so that they can cope with these types of changes to survive. There is an example, McDonald एक कंपनी है जो कि दे हैव वेरी हाई प्राइजेस, उनके जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत महंगे हैं। तो इंडिया में, इंडियन मार्केट में आने से पहले उन्होंने अपना जो भी प्रोडक्ट प्राइजेस था, अपना सारा प्राइस वैल्यूज उन्होंने चेंज किया। उन्होंने इंडियन मार्केट में सर्वे किया, यहाँ के मार्केट के हिसाब से लोग किस लेवल तक परचेज कर सकते हैं, उस बेसिस पे उन्होंने अपना प्राइस रखा। इवन यू कैन सी देयर आर मेनी स्टेट्स देयर वेयर वी डोंट हैव मैकडॉनल्ड्स, like for example in my state like Jharkhand, there is no McDonald stores here because they surveyed here, उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उस हिसाब से यहाँ पर जो लोग हैं उनके सर्वे के हिसाब से ये बताया गया कि the people here cannot afford the products of McDonald, so that's why यहाँ अभी तक McDonald की स्टोर नहीं है। तो इस हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो बाहर के एनवायरनमेंट में अपना उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना प्रोडक्ट है या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो मैनेजमेंट हैव टू बी डायनामिक टू कोप विद द आउटसाइड एनवायरनमेंट। So last is management is an intangible force. So management is an intangible force. So intangible, what is the meaning of intangible? Intangible का meaning ये होता है कि जो चीज आप देख नहीं सकते। तो मैनेजमेंट कैन नॉट बी विजिबल। हम मैनेजमेंट देख नहीं सकते बट हम मैनेजमेंट फील कर सकते हैं। वी कैन फील इट इन द प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिटवीन द पीपल एंड द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन में ये नोटिस कर सकते हैं कि किस तरीके से जो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में चीजें हैं वो मैनेज हो रही हैं, किस तरीके से प्लान्स बन रहे हैं, प्लान्स कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कैसे एम्प्लॉयज आर हैप्पी, दे आर सेटिस्फाइड। तो ये सारी चीजें हैं वो शो करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज प्रॉपरली मैनेज एंड देयर इज नो chaos. There is no chaos. No chaos and there is orderliness. Order, we can see the order in the organization, how the things are getting performed. People, employees are happy. They are doing their work properly. Everything is managed. These things show that organization is working with management.
but we cannot see management, we can feel it. So management is an intangible force. Now we have objectives of management. So management की क्या objectives हैं? So in an organization there are different objectives. Management has to achieve these objectives, all these objectives in an efficient and effective manner. So मैनेजमेंट को ये जो भी ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन की उन्हें अचीव करना है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर. So basically the first objective is organization objective. Organization objective is about कि ये ऑर्गेनाइजेशन इज अबाउट जस्ट द ऑर्गेनाइजेशन. सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सर्वाइव करना है, ऑर्गेनाइजेशन को कितनी प्रॉफिट अर्न करनी है और ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से बढ़ते रहना है. मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव्स. जो मैनेजर है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो भी गोल्स हैं वो अचीव होती रहे और विद द यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज. और जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का टू यूटिलाइज द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज. तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ऑर्गेनाइजेशन का यही होता है कि जो भी ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में लगी है उनका बेस्ट यूजेज कर सके, फुल पोटेंशियल तक उनका यूजेज हो और एंड फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज. सी सो टू फुलफिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. अगर ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज लगे हुए हैं और उनका बेस्ट यूजेज हो रहा है, मैक्सिमम यूजेज, तो जो हमारी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस की वो फुलफिल होगी, दैट इज टू अर्न प्रॉफिट. तो एक मैनेजर की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे गोल्स को टाइमली अचीव करे. सो विच मैनेजमेंट हेल्प्स इन दिस. सो फर्स्ट एंड these are the basic objectives of the organization or objective of the organization, that is survival, profit and growth. ये तीन बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन की. जैसे कि सर्वाइवल इज अबाउट to survive in the market. The business is survival by earning enough revenue. So जो business है मार्केट में सर्वाइव करने के लिए इट हैव टू अर्न रिवेन्यूज ओवर द कॉस्ट. जो बिजनेस का कॉस्ट है, जो डे टू डे एक्सपेंसेस लग रहे हैं उनके ऊपर द बिजनेस हैव टू अर्न रिवेन्यूज टू कवर दोज कॉस्ट, एंड बाय कवरिंग दोज कॉस्ट द बिजनेस विल सर्वाइव इन द मार्केट. सो सर्वाइवल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस. एंड सेकेंड इज प्रॉफिट. Profit is about कि after surviving the business have to earn enough profits to maintain its business, to cover the costs and risks. Just covering the cost is not enough. After covering the cost, there have to be enough profit for the business to have future growth. Then growth. Growth is about सर्वाइवल हो गया, प्रॉफिट अर्न हो रहा है. देन ग्रोथ इज अबाउट कि जस्ट नॉट स्टक इन वन बिजनेस. लाइक अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में एक ही प्रोडक्ट ग्रो कर रहे हो और उसके अलावा आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो, आप प्रॉफिट को सही यूज नहीं कर रहे हो, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो दैट इज बैड फॉर द बिजनेस. जस्ट टेक एग्जाम्पल ऑफ रिलायंस. रिलायंस हैव प्रोडक्ट in every sector. They have jewelry line, clothing line, shoes line. So they are growing their business. So growth is all about growing your business in different fields. To remain in the industry, the management must exploit fully the growth potential of the organization. Growth of a business can be measured in terms of sales volume increase, number of employees, number of products and increase in capital. तो इन सारी चीजों में उसकी इंक्रीज होती रहनी चाहिए. सेल्स में, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट लाइन में, इंक्रीज ऑफ कैपिटल. अगर आपने एक अमाउंट ऑफ कैपिटल से स्टार्ट किया है तो यू हैव टू इंक्रीज योर कैपिटल. ओके, नाउ द सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव इज ऑल अबाउट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. लाइक it involves the creation of the benefits for the society. Like organizational objective आपकी सारी complete हो गई, survival, profit, growth, everything is done. उसके बाद एक organization की responsibilities होती है towards the society.
लाइक गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, अपने एम्प्लॉयज के जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके बच्चों के लिए स्कूल्स प्रोवाइड करना. These types of things which an organization have to do for the society, whether the organization is economic organization or non-economic, whether it's a business or non-business. हर organization को कुछ चीजें society के लिए करनी होती है as a part for the society. Every organization, whether it's business or non-business, has a special obligation to fulfill. So, and one of the most important is using environment friendly methods. Like अगर एक प्रोडक्शन फैक्ट्री है तो अगर वो किसी इस टाइप का चीज प्रोडक्ट कर रहा है जिसमें कि केमिकल यूजेज है एंड गैसेस रिलीज हो रहे हैं, तो दे हैव टू टेक मेजर्स टू कंट्रोल दोज थिंग्स. सो एन ऑर्गेनाइजेशन हैव टू use environment friendly methods for the production. So you can see there is an case study of e-chopal by ITC in page number 10 of the NCERT book. After reading that case study, you can clearly get what is social objective. Now the third is personal objective. Organizational objective हो गई, social हो गई, आप for the society. Now personal is related to the people who are in the organization. ऑर्गेनाइजेशन आर मेड अप ऑफ द पीपल. तो जो पीपल है ऑर्गेनाइजेशन में वो डिफरेंट पर्सनालिटीज के होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड्स होते हैं, उनके डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स होते हैं. तो उनका हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय का उसका खुद एक गोल है, एक ऑब्जेक्टिव है, जो कि दैट्स व्हाई ही जॉइन द कंपनी टू अचीव दोज पर्सनल ऑब्जेक्टिव. तो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंडिविजुअल गोल्स भी फुलफिल हो, satisfy the diverse need of the employees. And with those objective, individual की objective के साथ साथ management have to channelize their objectives so that the organizational objectives can be achieved. These vary from financial needs such as competitive salaries, works, social needs such as peers. तो एक इंडिविजुअल की बहुत टाइप की नीड हो सकती है, जैसे कि किसी को हायर सैलरी चाहिए, किसी को सोशल स्टेटस चाहिए, किसी को रिकॉग्निशन चाहिए. तो दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स कंक्लूड द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. So now we are on the last topic, which is importance of management. So first is management helps in achieving the organizational goals. So management is required not for itself but for the achieving the organization goal. तो मैनेजमेंट सिर्फ पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए. तो बेसिकली managers channelize the efforts of every individual so that the organizational goal is achieved. तो इंडिविजुअल एफर्ट्स को इस तरीके से चैनलाइज करते हैं एक इंडिविजुअल के एफर्ट को कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी साथ साथ अचीव हो जाए. लाइक दे मोटिवेट एम्प्लॉय बाय सेइंग दैट अगर आप ये काम करते हो देन वी विल प्रमोट यू. सो इन दैट वे दे चैनलाइज द इंडिविजुअल एफर्ट्स so that the organizational goal is achieved. Then second is management increases efficiency. So management increases efficiency. The aim of management is to reduce the cost and increase the productivity. So the better planning, organizing, directing, staffing and controlling. These are the 5 functions of management. So manager क्या करता है कि he reduce the cost and increase the productivity of the employee by using the functions of the management, which is planning, organizing, directing, staffing and controlling. In this way, they manages the individuals, they manages all the resources, they reduce cost and increase the productivity by proper planning. So this way management increases the efficiency. Then third is management creates a dynamic organization. We know that जो outside environment है management apart from the organization का जो outside environment है वो dynamic है, वो
हर समय चेंज हो रहा है. सो मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को उस डायनेमिक एनवायरनमेंट से कोप करने के लिए. Like if we know that some policy is going to change or new government is coming or the policies will change, then managers and management help the organization in a way so that they can cope with that changes. Like if we know that policy is changing, then the organization can manage everything accordingly, according to that policy, which new policy is going to change, or what are the or even if the demand is increasing in the market, the demand for the products of the organization is increasing in the market. These things all are managed by the manager, and the manager in this way the management creates a dynamic organization to help the organization to cope with the outside changes. Fourth is management helps in achieving personal objectives. So, apart from the organizational objectives, we know that every individual have some personal objectives. They want, the objective like, financial needs or recognition or social needs. These types of personal objectives, every individual, every employee in the organization have these personal objectives. So management helps those individual to achieve those objectives. So manager helps, motivates them, leads his team to in such a manner that the individual members are able to achieve the goals. तो मैनेजर इस तरीके से सबको डायरेक्ट करता है, लीड करता है, मोटिवेट करता है कि उनके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो जाए और उसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो. जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इफ एम्प्लॉय इज मोटिवेटेड to do some work, and that after work that he will get the incentives or promotion or perks. So the employees get motivated and he give his best in that work. Then fifth is management helps in development of society. The last is management helps in development of the society. Management helps in the development of the organization through that it helps the development of the society. अगर एक business, एक organization बहुत अच्छा work कर रहा है, खुद भी grow कर रहा है, then उसमें बहुत सारे employment opportunities भी आएंगे, and those employment opportunities will be given to the employees in the society. It helps to provide quality products, create employment opportunities, just like I said, and adopt new technology. So अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल्स होता है कि वो अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करे सोसाइटी में, अच्छा सर्विसेज दे, it also creates employment opportunities. They also adopt the new technology which is trending and for the greater good of the people and lead the path towards growth. So in this way, organization helps the society to grow. They grow themselves and they also helps the society to grow. So in this way, a management helps in the development of the society. So अभी तक हमने इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स पढ़े उन टॉपिक्स से रिलेटेड ही ये कुछ केस स्टडीज मैंने दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 1, देन क्वेश्चन नंबर 2 and 3. These are 3 case studies which I have given you according to the topics which we have discussed in this video. So I really recommend you to, if you really learn from this video, then you can easily solve these 3 questions. So basically I will give you a tip that try to find the points which is related to the points which we learned earlier. मतलब वो points आप find करें जो कि आपने इस वीडियो में पढ़े. Like b.st is all about कि आप जो चीजें आप पढ़ रहे हो वो आपको बाय हार्ट लर्न हो जानी चाहिए, ताकि अगर उस इम्पोर्टेंस या उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कोई भी लाइन आपको मिलती है क्वेश्चन में तो आपको उस चीज को पिन पॉइंट करना होगा. दैट ऑब्जेक्टिव और दैट विल बी द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट. तो सारा चीज उसी से रिलेटेड होता है. एंड try to solve these 3 questions, and I'm ending this video here because I don't want to make it so long, so you will get lethargic. ज़्यादा बोर नहीं होना.
So we will make a second part of this video, and in that part we will be studying nature of management, which topic which are left are what are the natures of management, like science, profession, art. Then levels of management, management की क्या क्या levels होती है, like top level, middle, then lower. Then functions of management, जो मैंने वीडियो में भी आपको बताया, like planning, organizing, directing, staffing, controlling, ये फंक्शंस है. ये आगे के टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, ये बहुत ही इजीली, एंड इन टॉपिक्स का ही सबसे ज्यादा यूज है. सो ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. So, goodbye.